Hello students. So now we'll start with the derivations of the chapter fluid mechanics. ठीक है? Okay? Fluid mechanics के derivations अभी हम करने वाले हैं. Now this is a very huge chapter. Okay, तो इसका आप देखोगे तो competitive exam level में there are separate chapters of fluid statics और fluid dynamics. That is fluid in motion and fluid at rest. अलग-अलग से दिया हुआ है, but your NCERT has been clubbed as a single chapter. Okay? According to NCERT, it's a mechanical properties of fluid. So we'll start with this one. So the derivations given to you is first pressure due to liquid column. क्या होता है pressure due to liquid column? We know that pressure equals force upon area. ठीक है? And what is force? Work upon area. What is work? Half m, or rather we don't write it like that. Force को आपको mass into acceleration. ठीक है? So mass into acceleration upon area. Now one more thing. We're talking about a liquid column. Liquid column का मतलब क्या है? There is liquid filled in a shape container, a container with a specific shape. ठीक है? वो liquid column होता है. So I'm talking about any liquid column in that any particle over here. So उस particle के ऊपर pressure कैसे गिरता है? Pressure is applied like this. And what is that pressure? That is mg. Okay? तो यहाँ पे mg will be the force. Okay? Upon area. What is mass? Mass is nothing but density rho into volume v into g upon area. Volume can be written as area into height. Okay, rho a h g by a and a gets cancelled. So pressure in the liquid column is equal to rho g h. That is the first derivation. The next derivation given to you is Pascal's law without the effect of gravity and with the effect of gravity. So for without the effect of gravity, आप क्या करने वाले हो? You're going to consider a prism, okay, inside a liquid vessel, okay, or inside a fluid vessel. So एक vessel है जहाँ पे fluid है, और उसके अंदर prism है. Prism क्या है? Prism is a right triangle that is the solidified right triangle, ठीक है? So it will be like this, a right angular prism. ऐसा रहेगा प्रिज्म. This is my face A, face B, face C, and this let it be my steradian. मतलब ये पूरा solid angle है. The solid angle steradian is theta. Okay. Now tell me, what is sin theta? Now I know that एक और बात मुझे पता है, that is the forces and the areas. This is area A, area B, area C, and यहाँ पे force A, force B, and force C apply होने वाला है. So sin theta in terms of force, sin theta can be written as what will be sin theta over here? B upon A. Okay. Yeah, rather A upon B. A upon B. And that is equal to forces के terms पे FA upon FB. So from there I can say FA is equal to FB sin theta. Similarly, if you want to calculate the force C, then I can use it by cos formula. So I get FC is equal to FB cos theta. Okay, opposite upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse. Opposite is opposite is FB and adjacent is FC. FA being the hypotenuse. ठीक है?
एंड सिमिलरली एरिया का आप कैलकुलेट करो, सो आई कैन अगेन अप्लाई sin थीटा इक्वल्स a by b इक्वल्स a अपॉन a b, where capital A denotes area. तो यहाँ से मुझे मिलता है a b is equal to, or rather a is equal to a b sin theta. Similarly a c is equal to a b cos theta. Okay, now divide fa by a, तो क्या हो जाएगा fa by a में ये sin theta कैंसिल हो जाएगा, a I mean ab fb, so fa by a equals fb by ab. Similarly fc by ac को आप डिवाइड करो, so cos theta gets cancelled, fc by ac equals fb by ab. From here, since the RHS is equal, I can say fa by AA equals FC by AC, and that is equal to FB by AB. So PA equals PB equals AC, because P is force upon area. That is my Pascal's law without the effect of gravity. So with the effect of gravity क्या होने वाला है? So for with the effect of gravity, I'm going to consider a cylinder in a fluid container. A cylinder situated in a fluid container such that fluid का level इधर है ऊपर, cylinder के ऊपर है fluid का level. So the diagram will be like this. This A1, A2, और यहाँ पे पूरा fluid. So it is submerged inside fluid. So there is force acting here, force acting here, force acting here in all directions. Okay. We need to prove that the pressure is equal in all directions, which is not possible because gravity के हिसाब से आपका mg भी यहाँ पे act करने वाला है. So what are the varying forces? So the varying forces are mg acting downwards on this area, okay, and buoyancy acting upwards on this area, sideways में तो balance हो जाएगा, and the weight of the body itself acting atmospheric pressure here. So the various forces are weight of the body, that is mg acting downwards, and force of atmosphere, that is p atmosphere or p1 equals what a acting upwards, and force of buoyancy, that is p2a2 acting upwards. So at equilibrium this is balanced, so mg is equal to p1a1 minus p2 a2. Okay, ऐसे can I take anything common? mg I can put it as rho vgh. What is mass? Rho into v g, rho vg, and this will be p1 p2 a1 a2. इसको आप एक और तरह से लिख सकते हो, you can take the a area common outside, because we can say a1 is equal to a2 because this is a cylinder. Cylinder में आपका lower area जो है वो equal रहता है. So let me make it as a1. Okay, तो यहाँ पे बस a रहेगा, a1 और a2 नहीं रहेगा, because the cylinder has equal areas on both the sides. So considering that, मुझे यहाँ पे p1a minus p2a मिलेगा. So from there, rho Vg equals pressure equals P1 minus P2 into, that is the Pascal's law, rho Gh. Rho Vg rho. फिर हाइड्रोलिक प्रिंसिपल तो आपको पता है ही, there is nothing in that. हाइड्रोलिक प्रिंसिपल क्या कह रहा है? यूजिंग दिस Pascal's law only. So एप्लीकेशन ऑफ Pascal's law में आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन आता है. There is nothing but PA equals PB. So FA upon AA equals FB upon PB. So यहाँ पे आप एरिया और फोर्स को you're going to alternate it in such a way कि आपका फोर्स, one of the force, that is effort will be less,
suppose this is my effort and this is my load, then effort will be less, load will be more. So area has to be more in effort and less in load. क्या आपका हाइड्रोलिक इफेक्ट दिखाई देगा, reducing the effort. यहाँ पे आपका energy is getting conserved. So we are following the conservation laws. So the next derivation is continuity principle. Okay, continuity principle क्या कहता है that in a cross section of fluid, if any fluid that is in flowing, okay, that is fluid with a आप कौन सा flow usually use करते हो, turbulence या linear flow? You use linear flow because turbulence flow has got other external energies, the energy of rotation, energy of vibration, translational energy. ठीक है, वो also the turbulent flow also collides with other particles, collides with the water molecules, और वो collide करता है with other particles as well. So हम turbulence को यहाँ पे use नहीं करते हैं. We are not going to use turbulence in any theory. हमेशा हम कौन सा use करते हैं? We always use linear laminar flow. Okay. So in the laminar flow, the continuity, that is principle of continuity, states that कोई भी cross sectional area ले लोगे तो वहाँ पे the rate of flow remains the same. Okay. So if I take any flow across various areas like this be my one area, this be my other area, this be my other area. Point P, Q, R. Okay. Suppose here the area is A, here it is A1, here it is A2, again it is A1. Okay. So क्या होगा? The alternation of pressure takes place. So what I do is I take the mass of water flowing in area A. So mass of water is given by pressure into area. First of all यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, M is equal to pressure into area into rho into volume. Yeah. Area, volume, time, rho. Pressure है यहाँ. Volume, area, rho, time. Okay. It's a function of volume, area, rho, and time. So for mass, that is the mass of water flowing from the exit A, MA, that is equal to VA, AA, BA, T. P नहीं, rho. But the rho is constant. Okay. MB is equal to VB, AB, rho B. MC is equal to VC, AC, rho T. Now if I equate these, because the mass of water remains the same, amount of water flowing in any streamline or turbulence flow remains the same. So इसको equate करने पर मेरा rho T gets cancelled. I'll be left with BA, AA, VB, AB, BC, AC. Okay. So what can I say over here? VA, AA equals VB, AB equals BC, AC. And this is nothing but the rate of flow. So the rate of flow across the क्या कहते हो आप, any flow with various area of cross section remains the same. Area of cross section हालांकि यहाँ पे अलग अलग है, फिर भी आपका rate of flow same है. That is the law. The next is various types of energy. This is actually prerequisite for your Bernoulli's principle. So what are the various types of energy that you have considered? Pressure energy, kinetic energy, potential energy. Okay, surface energy आ गया क्या? Let us have a look at each of these. So first pressure energy. So pressure energy क्या है? That is nothing but energy is nothing but force, that is work done. W, which is equal to force into displacement. और यहाँ पे force क्या है? Pressure into area into displacement. That is equal to, pressure को आप कैसे लिख सकते हो? Pressure can be written as, what is pressure? Force upon area. Area को आप height into base into height लिख सकते हो. So pressure A S
और यहाँ पे A is nothing but your area, S is your displacement. ठीक है, एरिया का डायमेंशन क्या है L2, L raised to the power 2. S का डायमेंशन क्या है L. When you multiply the dimension, you are going to get volume. और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है L3, है ना. This will be P area into displacement will give you volume. As this displacement varies, delta S है, so यहाँ पर भी delta V. This is my pressure energy, P delta V. Kinetic energy क्या होगा? Energy kinetic equals half mv square equals half m के बदले में आप लिख सकते हो रो. Now density rho is equal to mass upon volume. So mass is equal to density into volume. So rho volume into v square. Okay, this is my energy. Energy potential is given by mgh equals rho volume g. So for unit volume, जो volume constant है, this would be P, this would be half rho v square, and this will be rho gh. When the volume is constant. Okay? And according to Bernoulli's principle, these energies are getting conserved. Okay? तो अभी हम Bernoulli's principle को prove करते हैं with the help of these energies. Considering flow of liquid across this membrane, ये membrane कैसा है? It allows streamline flow of fluid. ठीक है, and there is one more speciality, that is height difference. From a normal position, this gives a height h1 और इसका height है h2. इसका area of cross section है a, a1, v1, p1. v being the velocity and p being the pressure. यहाँ पे क्या होगा a2, v2, p2. Note that हमने कहीं पर भी वॉल्यूम को नहीं मेंशन किया है because volume is unitary. एक यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर थ्रू आउट फ्लो कर रहा है. So we are calculating area, velocity and pressure for 1 liter volume. So volume is not required because वो constant हमने mention किया है, हमने consider किया है, we have assumed that volume is constant. ठीक है. So on doing so, अभी आप मुझे बताओ इसका क्या क्या एनर्जीज रहेगा. So the pressure energy is equal to P delta V equals P for a constant volume, that is equal to P1 in the first case, P2 in the second case. So the total will be P1 plus P2. ये आपका pressure energy है. So energy kinetic in both the cases will be half rho V square will be V1 plus V2 the whole square. Energy potential will be rho g, h के बदले में आप h1 plus h2 that is whole multiplication of this. Okay, now he says these are equal because at equilibrium p1 plus p2 equals half rho v1 plus half rho v2 square plus rho g h1 plus rho g h2. On transposing all the 1 terms to one side and 2 terms to another side, I'll get P1 plus half rho V1 square plus rho g h1. यहाँ पे actually minus आएगा, यहाँ पर भी minus आएगा. Okay, that will be equal to P2 plus half rho V2 square plus rho g h1. This is my Bernoulli's principle. No. So using this Bernoulli's principle, we are now going to look at the various applications. आपका applications दिया हुआ है Torricelli's theorem and Venturi meter. ठीक है, for derivation. उसके अलावा और भी बहुत सारे आपको applications दिए हुए हैं, बहुत variety की applications दिए हुए हैं. So should we discuss some? ठीक है, हम एक काम करते हैं. एरोप्लेन लिफ्ट ये आपको पता है. ठीक है, फिर एयर स्प्रेयर, वाटर स्प्रेयर, वाटर और एयर फ्लूइड स्प्रे करने का आपको पता है. एंड देन और कोई एप्लीकेशन
आपका ब्लड प्रेशर, मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, उसका भी आपको पता है। ओके, सो दोज आर एनफ। उसके अलावा आपको दो और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दैट इज टू मोर डिटेल्ड एप्लीकेशन, जो है वेंचुरी मीटर और टॉलिसिनस थ्योरम। हम उन दोनों को करने वाले हैं। टॉलिसिनस थ्योरम ओवर हियर काफी सिंपल थ्योरम है, गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ वाटर इन अ फ्लूइड कंटेनर। मतलब वाटर या कोई भी फ्लूइड की बात करो आप, उसका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। व्हाट इज एफ्लक्स? एफ्लक्स का मतलब होता है इफ यू हैव अ कंटेनर लाइक दिस एंड देयर इज फ्लूइड इनसाइड इट, इसके ऊपर प्रेशर है P1 which is usually equal to P atmosphere unless the container is closed. Okay, and there is one hole made in the bottom side. यहाँ पर अगर मैंने होल बना दिया और यहाँ से पानी नीचे चल रहा है, now what is the motion of this water? आप कोई भी एक बाउल ले लो या वाटर बॉटल कुछ भी ले लो, वहाँ पे आप नीचे एक होल बना के पानी पी रखते हो। You usually see that the water flows in parabolic motion, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको टाइम पीरियड पता है, आपको इसका रेंज पता है, आपको इसका मैक्सिमम हाइट पता है। ओके, now the velocity of this projectile motion or the initial velocity of this projectile motion is given by your Torson's theorem। ठीक है, so what is said, यहाँ पे होल बनाओ आप such that the height from the bottom to this hole is y1 and from the top to the hole is y2 or either h. So the net height will be y2. So what is y2 minus y1? H. So now, according to Torson's theorem, इसको आप पहले फॉलो करो, P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 equals P2 plus half rho V2 square plus rho G H1 and H2. That is a simple Bernoulli's principle that is followed. यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। Now what is the initial velocity? Initial velocity is 0. जब पानी ऊपर है इसका वेलोसिटी तो नहीं है, so initial velocity that 1 be the initial quantities. So यहाँ पे ये टर्म हट जाएगा, this will become 0 because initial velocity is 0. Now we can get the P1 P2 terms on one side. So P1 minus P2 equals half rho V2 square plus rho G H2 minus H1 because this H1 terms goes to the other side. Now what is P1 minus P2? We know that P1 minus P2 is equal to, यहाँ पे इसका work it's not required actually, वो आप Venturi Meter में use करो, you don't use the work energy theorem over here, उसको आप ऐसे ही लिखिए, this is better, okay, let it be like ये step यहाँ से get rho G H1, यहाँ पे हाफ rho V2 square है ना, so we need this term, यहाँ पे आपका velocity of efflux V2 दिया हुआ है, so let us keep that term on that side, so यहाँ पे मुझे मिल जाएगा P1 plus rho G H1 और यहाँ से ये इधर आ जाएगा, so ये minus rho G H2 minus P2 equals half rho V2 square. So from here P1 minus P2 into rho G H1 minus H2 is equal to, यहाँ पे अगर मैंने V2 डायरेक्टली रख दिया, so this will become the whole thing will be multiplied by 2 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा rho, ओके, और इसका अंडर, this is my velocity of flow. ठीक है, so that is the velocity of efflux का formula. The next formula given to you is Venturi Meter. इसका भी डेरिवेशन काफी आसान है, not finding my pen, चलो दिखाई दे रहा है ना बोर्ड, because this pen is empty, I cannot find a new pen. The next application is Venturi Meter.
So Venturi meter का diagram बहुत crucial है because तो बोर्ड is clear, पेन लिखना ही ना. Anyway, so Venturi meter जो है इसका diagram as I told you it's crucial because it's quite tough. यहाँ पे आपको काफी difficulty होता है because यहाँ पे आप multiple heights consider कर रहे हो, multiple volumes consider कर रहे हो और बीच में आप एक dip भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? So there's a dip in the between. ऐसा आएगा Venturi meter. ऐसा. From here. ठीक है? And over here बीच से I'll make a opening. That is a YouTube opening. वो इधर आ जाएगा. There is a connection. Okay. This will be the Venturi meter. यहाँ पे मेरा एरिया है A1, velocity V1, pressure P1. यहाँ पे that is at this point, okay. यहाँ पे मेरा एरिया होगा A2, velocity V2, pressure P2. Velocity and pressure increases, area decreases. Height यहाँ से कुछ पानी इधर आएगा, यहाँ पर भी कुछ पानी फ्लो होगा, ठीक है? This will be my height H1, this will be my height H2. और उन दोनों के बीच का डिफरेंस will be h. ज़्यादा इसको h1 h2 let it be h because यहाँ पे आपका equatorial axis रहेगा. From here the entire height is h. जैसे h1 यहाँ पर भी h1 और यहाँ पर भी h1 because ये एक constant flat planar region में, ठीक है? Okay. So now apply your Bernoulli's principle over here. H is constant, so आपका H मतलब कौन सा टर्म चला जाएगा? Rho g H टर्म just go away. So rho g H को आप निकाल के फिर देखो क्या रहेगा बचेगा आपके पास. P1 minus P2 रख देते हैं इधर. So directly I'm writing the final equation. So P1 minus P2 is equal to यहाँ पे क्या जाएगा half rho V1 square minus half rho V2 square. Rho GH का टर्म निकल जाएगा because H is constant. What is P1 minus P2? This might okay. इसके साथ आप A upon A भी लिखते हैं, A1 upon A2. ठीक है? What is P1 minus P2? यहाँ पे आप आपका work theorem लगाओ, work pressure theorem. So we are applying work pressure theorem, then P1 minus P2 is rho mgh. So यहाँ पे rho mgh आएगा. That is equal to half rho नहीं ना, half rho V1 square minus half rho V2 square plus A1 upon A. ठीक है? So again we simplify this. इसका स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर. ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करो और डायरेक्टली आपका वेलोसिटी आ जाएगा. एक दिस टर्म ये आपको जो वेलोसिटी टर्म है इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा V2 is equal to under root of because ये entire thing is under root. यहाँ पे क्या बचेगा इसको निकालने पर मुझे what is velocity 1? ये velocity I don't need that, I need velocity 2. So V2 को मैंने रखा. So I'll be left with half rho V1 square plus A1 upon A2 the whole square plus half rho upon rather इसको आप A1 यहाँ पे A2 आ जाएगा, this will be square square, okay, plus ये नीचे आ जाएगा. So rho mgh. So from here I'll get under root of 1/2 कॉमन ले सकता हूँ मैं दोनों टर्म से. Rho V1 square plus यहाँ पे A1 square A2 square will go out, it will become A1 by A2. So I'll be left with 1/2 rho V1 square minus V2 नहीं है मेरे पास.
बाहर आ जाएगा a1 upon, this is my velocity ve, that is velocity of flux. नोट करो. विस्कोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है ही. What is the formula for viscosity? Formula for viscosity is given by, when the force of viscosity is directly proportional to, or rather the pressure of viscosity is directly proportional to velocity gradient, that is V upon L. So what is pressure? Force upon area, which is directly proportional to V upon L. So force directly proportional to V upon L into A. So force is equal to constant eta A V upon. This is my viscous force or viscous drag. On the basis of viscosity, you have two more theorems, that is application of viscosity property. The first one is Poisson's equation, and the second one is Stokes law, or third Reynolds number. So what are these? Poisson's equation, Stokes law, and Reynolds number. देखते हैं. Now this Poisson's equation ये आपको क्या देगा? Rate of flow of volume of liquid in capillary. Okay. Okay. इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है आपको. Poisson's equation doesn't have any derivation. So we directly go to Reynolds number. Reynolds number का simple formula है. आप formula भी by heart कर लोगे तो there is nothing. It is rho eta d upon Reynolds number, जिसको आप Rn कहते हो, that is rho v d upon, because Reynolds number Rn is directly proportional to rate of flow upon velocity. So इसको आप इधर फॉर्मूला के ऊपर लिख सकते हो. So with the help of this expression you can form the formula. ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है. So after Reynolds number, you will be given, what is the next application of viscosity? Stokes law of velocity. Now, यहाँ पे एक काफी important बात यह है, Stokes law में you must know the forces, that is forces in different directions of your flow. जैसे for instance, if we are talking about a drop of water जो ऊपर से नीचे गिर रहा है in a fluid medium, ठीक है, तो उसका अलग अलग फोर्सेस किस डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड के साथ वो अप्लाई करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. इफ यू नो दैट, देयर इज नथिंग. यहाँ पे आई टेक अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो falling down a medium of density sigma. तो इसके पास कौन सा फोर्सेस है? दिस इज mg acting downwards. And what is mg equal to? Mass is rho into volume. ठीक है, और what is volume? For a drop of water it is spherical. यहाँ पे आ जाएगा rho, volume will be 4/3 pi r cube g. ठीक है. And what is buoyancy? Buoyancy is acting upwards. ठीक है, and buoyancy is along the medium sigma. तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज सिग्मा. यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब. और एक और बताया आपको विस्कस ड्रैग. ठीक है, दैट इज विस्कस फोर्स. और विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है. and what is the magnitude of viscous force? 6 pi eta ab. Eta ab. These are your forces. So rather r cube के बदले a cube. Now equate these forces and you will directly get your Stokes law. So at equilibrium क्या होगा? This downward force and upward force will be equal. So rho 4/3 pi, यहाँ पे a cube g है, a cube g, that is equal to
ऊपर वाला फोर्सेस सभी दैट इज 6 पाई बीटा ए बी प्लस रो 4/3 पाई ए क्यूब जी। ए सभी से कॉमन है, मैं निकाल सकता हूँ, पाई सभी में कॉमन है, मैं निकाल सकता हूँ। गेट द सेम थिंग ओवर हियर दैट इज इक्वल टू 6 4 तो 2 भी कॉमन है, 2 पाई ए मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे 2 से ये 4 चला जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल्ड, ए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे और क्या बचेगा, आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन एंड बी लेफ्ट विद 3 बीटा बी प्लस, यहाँ पे कोई बी टर्म नहीं है, चल बी अल्फा 4 के बदले यहाँ पे 2 आ जाएगा बाई 3, पाई नहीं रहेगा, आर स्क्वायर जी। ओके दैट इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर जी बाई 3। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच इज दिस वेलोसिटी ओवर हियर। सो वेलोसिटी का आपको दो टर्म्स दिया हुआ है, दोनों को इस तरफ लेके देखते क्या होता है। आई विल टेक द एलसीएम फ्रॉम दिस साइड, so I'll be left with, after simplifying this expression I'll get 2/9 velocity is equal to 2/9 multiplied by a cube rho minus alpha g upon eta, a cube rho minus alpha into g upon, this is my velocity। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, I don't know where's my pen। Let's see if I can find it somewhere। This pen पे display है, writing this pen। ये बात क्लियर है? Okay। The next derivation for this chapter, one of the last derivation, that is for your surface energy। इसका भी पूरा एप्लीकेशन हो गया, हमने दो एप्लीकेशंस किए इसका। Next is relation between surface tension and surface energy and an excess pressure। After these two derivations we are done with this chapter। So surface tension और surface energy का relation आपको calculate करना है। You already know that surface energy is equal to surface tension। Why? Because surface tension is the work done and surface energy is the energy stored। Work done is equal to energy, so obviously these two are equal। but आपको उसको prove करना पड़ेगा with the help of a derivation। so, इसका derivation आप कैसे करोगे? Consider a structure like this made up of a hollow cylinder wire, और यहाँ पे क्या होगा, this is my length L, यहाँ पे there is an adjustable holder, और ये होल्डर को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके अल्टरनेट हो गया, ठीक है, मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा ए बी सी डी सी डैश बी डैश, ठीक है। नाउ देयर आर टू सरफेसेस ओवर हियर, ओके। So now tell me what is surface energy? Surface energy is equal to work done, whereas surface tension is equal to force upon L। So from here force is equal to SL। Okay. Since there are two surfaces, it will be 2SL। Now what is force? Force is equal to work done, or rather work done is equal to force into displacement। What is force applied over here? Force applied is mass into acceleration। क्या हम उसको नहीं देखेंगे, we look at this। So यहाँ पे मुझे बचेगा 2SL delta x being the displacement, ठीक है। Now surface energy is defined as, or rather surface energy को आप लिख सकते हो, it is the ratio of work done per change in surface area, unit change in surface area, ठीक है। So energy surface or ES is equal to work done, that is 2SL delta x by change in surface area, that is
2SL। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। I'll be left with delta x, which is what? This is surface tension. ठीक है, x भी कैंसिल हो जाएगा ना, x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x भी कैंसिल हो जाएगा। So I'll be left with energy surface is equal to surface tension S. S is surface tension, ES is energy surface, so that's surface energy. ठीक है, that is how we prove that surface energy is equal to surface tension. क्या किया हमने? पहले surface tension को calculate किया, which is force per imaginary length L. So force is equal to 2SL. Work done is force into displacement is equal to 2SL into displacement. Okay. And what is displacement over here? Displacement को या तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, it's better you write it like that only. Okay. Force into displacement ऐसे लिखोगे तो अच्छा है. फिर दोनों को डिवाइड करो, रेशियो निकालो, you get this answer. Okay. So the next derivation is excess pressure. Excess pressure आपने दो केसेस पढ़ा है इसमें. So excess pressure in a liquid column. ठीक है. तो यहाँ पे liquid column दो तरह से हो सकता है. It could be either a spherical liquid bubble which is solid, or a hollow spherical liquid bubble. Okay, that is bubble and a liquid sphere. A drop of water, for example, or a detergent bubble. कुछ भी आप दे सकते हो. ठीक है. So excess pressure के लिए हमने दो formulas पढ़ा हुआ है. First, solid liquid sphere. What are the inward forces and what are the outward forces? Inward forces में आएगा आपका surface energy, surface tension S pulling it inwards. कोई भी एक point ले लो आप, उस point पे मेरा surface energy S is pulling it inwards. बाहर कौन ले आ रहा है? Excess pressure P. नहीं दिखाई दे रहा, मुझे क्लियर ना? ठीक है. So what is this force F pulling it outwards? That is equal to pressure into area. And what is pressure? Pressure is given by force upon area, or else I can use another formula, that is because force upon area करोगे तो area cancel हो जाएगा, and force into forces को continue. Pressure को आप एक और formula लिख सकते हो, that is rho GH. उसको भी आप लिख सकते हो. There's different ways of mentioning pressure. आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है. आपने पास्कल्स का प्रेशर भी आप यहाँ पे यूज करें. There are different ways to derive. ठीक है. Pascal pressure is also one method. आप इसको बस इस तरह से लिखो. Pressure into pi r square, because pi r square is the total surface area pulling it inwards. This is my F. And what is surface energy S? That is equal to F upon L. F upon L, that is equal to, और आगे यहाँ से आप लिख सकते हो F is equal to SL, that is equal to, अभी SL क्या बन जाएगा यहाँ पे? SL will be, S का फॉर्मूला क्या है? हमने अभी अभी पढ़ा था, that is 2 pi r, so it will be 2 pi r. L को आप लिख सकते हो S 2 pi r. So now these two forces are equal. So P pi r square is equal to S 2 pi r. Pi and pi gets cancelled, R and R gets cancelled. और क्या कैंसिल हो सकता है? तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा excess pressure is equal to S by 2. ठीक है. एक और R भी है ना, so R भी है, जो will be 2S by R. That is my excess pressure. ठीक है. क्या किया हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस को लिया. इंटरनल फोर्सेस प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर. एक्सटर्नल फोर्सेस इज सरफेस टेंशन, दैट इज SL. और L के बदले में I can write 2 pi r, and then equating these two, pi and pi gets cancelled, R and R square gets cancelled. So मेरे पास P बच जाएगा, that is 2S upon R. Now inside a hollow spherical bubble, there is only one difference. क्या है यहाँ पे? आपने S कंसीडर किया है. What is S over here? S is nothing but the surface energy.
or the surface tension. दोनों same है, surface tension, surface tension. Over here, in a hollow spherical bubble, आपके पास दो surfaces हैं. Okay, and since there is two surfaces, आपके यहाँ पे 2s बन जाएगा. This will be same. Again, F is equal to PA, F is equal to P pi r square. यहाँ पे 2s is equal to F upon L और F is equal to 2s. Okay, that is equal to 2 into S into 2 pi r. That is equal to 4 pi r. Okay, now equating these two, you will get P pi r square is equal to 4 pi rs. Pi and pi gets cancelled, r and r gets cancelled. So P is equal to 4s upon. That is the difference. यहाँ पे pressure will become double. Because there are two surfaces, pressure will also become double. ठीक है? Okay. So yeah, that's it. इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. There is one more formula, that is ascent formula. इसका derivation usually नहीं आता है, okay, because it's very uncommon. फिर भी अगर पूछा है तो I'll do one thing. I'll just give you the framework of that derivation. Okay, ascent formula. Although it's not there in your syllabus. Ascent formula के लिए we're going to consider a capillary tube in a vessel filled with fluid. ये fluid capillary पे ऊपर आ जाएगा. Okay, say it raises to a height h. Okay, so यहाँ पे h height पे ये ऐसा एक meniscus बना देगा. This some more area over here और यहाँ पर आपका रहेगा surface tension tangential. यहाँ पे आपका surface tension S और यहाँ पे आपका surface tension S. इसका component इधर आ जाएगा V, इसका component इधर आ जाएगा. Suppose let it be R and R. ठीक है? इसका आप further components break कर सकते हो. S will be S sin theta. यहाँ पे रहेगा S cos theta. Sin theta and sin theta even over here gets cancelled. Cos theta ऊपर है नीचे नहीं है तो cos theta is effective. So the upward force is cos theta. So I can again write over here. इसको मैं replace कर सकता हूँ. Upward force F upward. ठीक है? और कोई upward force है? नहीं. Buoyancy है ना? Buoyancy. That is equal to downward force, that is weight. Okay? Buoyancy आप यहाँ पे consider कर सकते हो. There is no object actually here. Since there is no object, you will not consider any buoyancy. Okay? So what is upward force? Upward force is S cos theta plus 2 pi r और rather into 2 pi r because यहाँ पे आपके पास दो surfaces हैं. 2 pi r is the surface area. यहाँ पे आपके पास meniscus है जिसका surface है. Okay, so we are going to use 2 pi r over here. And that is equal to downward force and downward force is mg. mg को आप लिख सकते हो rho vg और volume को आप लिख सकते हो rho g into volume क्या है? The net volume is given by the volume with this height h, that is cylinder. The volume of the cylinder with the height h क्या है वो volume? It is 1/3 pi r square h plus volume of the meniscus with this volume, that is volume of the cylinder with the height r, because यहाँ पे आपको ये particular volume भी चाहिए, the volume होगा. ठीक है? उसको आप कैसे लिख सकते हो? Volume of the cylinder with the height r, that will be 1/3 pi r cube. H and r gets multiplied. Now finally you are going to subtract this volume, that is volume of this hemisphere with radius r. What is volume of the hemisphere? 2/3 pi r. इसको आप subtract करोगे तो you'll be left with another minus 1/3 pi r cube. तो यहाँ पे एक और 1/3 pi r square h है. यहाँ पे आप 1/3 pi r square को common ले सकते हो. You'll be left with r plus h. So that will be your volume, and that is equal to this. Pi and pi gets cancelled. R and R can also get cancelled. आपको क्या calculate करना है? The height, that is h. So h को आप इधर ले आओ, sin theta को इधर ले आओ. So finally you'll get height
फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और आपका हाइट क्या रहेगा आफ्टर यू डू ऑल द सिंप्लीफिकेशन, इट विल बी 2x cos थीटा अपॉन rho g r. That will be your height. ठीक है, so that's it. तो इसके साथ आपका फ्लूइड्स का सभी हमने डेरिवेशन कर रखा है. इसमें वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑब्वियसली. ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लूइड का खत्म हो गया. नाउ देयर इज वन मोर चैप्टर लेफ्ट, आई मीन टू मोर चैप्टर्स लेफ्ट, जो है आपका थर्मल फिजिक्स का पार्ट. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल फिजिक्स. आपका जो सॉलिड चैप्टर है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इस चैप्टर में और कुछ नहीं है बिकॉज देयर इज नो डेरिवेशंस. तो वहाँ पे आपका बस आ जाएगा मॉड्यूलस, मॉड्यूला ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलस, दैट इज वंस अगेन स्ट्रेस और शियर मॉड्यूलस, और आपका लॉन्जिट्यूडिनल मॉड्यूलस, इसको आप यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं. एंड देन देयर इज बल्क स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, linear stress, longitudinal stress, bulk strain, longitudinal strain, and आपका rigidity, the strain of rigidity. That's it. And then you have your applications of elasticity. That's it. So उसमें कोई derivation आता ही नहीं है. इनफैक्ट thermal physics में भी उतना नहीं आता. There is only one, that is Newton's law of cooling का एक है. क्या वही एक ही है वहाँ पे, Newton's law of cooling का. थर्मोडायनामिक्स पे बहुत सारे रहते हैं, वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ऑल दैट. वो सब मैं आपको एक वीडियो में कंबाइन करके नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा. ओके, थैंक यू.